Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum. This is Misbah Sajid, and I welcome you all to my channel Talim for Everyone and Computer Science for Grade 10 Karachi Board Lecture Series. Unit 1 Problem Solving and Algorithm Designing. Lecture number 2 for Unit 1, and its agenda is Section 1.1 Algorithm and its subsection definition of algorithm, role of algorithm in problem solving, and algorithm example. At the end of this lecture, inshallah ta'ala, a student would be able to define the term algorithm and discuss the importance of algorithm in problem solving. And at the end of this lecture, inshallah, a student would also be able to design algorithm to find some average volume percentage and others. Now let's start. Section 1.2 algorithm, it's on page 5 of your textbook. So the word algorithm comes from the 9th century mathematician Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, Latinized as algorithm. Algorithm is a step-by-step finite sequence of instruction to solve a well-defined computational problem. To solve a complex real-life computational problem, first step is to define the problem clearly. Secondly, design the algorithm to solve this problem. So, फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही होता है किसी भी प्रॉब्लम को, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को जो आइडेंटिफाई करना, डिफाइन करना कि बेसिकली की प्रॉब्लम है क्या. देन आफ्टर दैट प्रोग्राम करने से पहले उसका स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में जो इंस्ट्रक्शन लिखना ताकि जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, दैट इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम. टू सॉल्व एनी complex real life computational problem, first step is to define the problem, then secondly design the algorithm to solve this problem. Okay. Optimization of a program is directly depends on how the algorithm has been designed. Optimization means the process of modifying a software system to make some aspect of it more efficiently or use fewer resources. So it is directly depends on how the algorithm has been designed. मतलब कि अगर कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, अगर वो अच्छा चल रहा है तो इट मीन्स कि उसका एल्गोरिथम अच्छा डिजाइन किया गया. अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें जो है बजट ज्यादा, मतलब कि बजट हमारा जो है बहुत ज्यादा लग गया उस पे, मीन्स प्रॉफिट फ्रेंडली नहीं है या जो है टाइम फ्रेंडली नहीं, सो इट मीन्स कि हमारा एल्गोरिथम उस तरीके से डिजाइन नहीं हुआ. सो हियर द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम is directly depends on how the algorithm has been designed. So, but for a large program, there are few steps of refinement involved when a problem is converted to program. चलो कभी कोई छोटी प्रॉब्लम हो तो उसे डायरेक्ट सॉल्व भी कर लें, लेकिन अगर कहीं भी लार्ज प्रोग्राम हो तो उसके लिए क्या किया जाए, लार्ज प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उस प्रॉब्लम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करने से पहले लाजमी है कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है लेके चलें. सो इसमें यह एक मतलब कि प्रोसेस है, 3 स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ रिफाइनमेंट जिसको कहा जा रहा है. उसमें क्या है कि मैथमेटिकल मॉडल, फॉर्मल लैंग्वेज एंड डेटा स्ट्रक्चर. बेसिकली एल्गोरिथम आर divided into 2 things: informal algorithm and formal algorithm. Informal algorithm means mathematical model, इसमें कुछ graphical representation यूज होंगी. और formal algorithm means pseudo language, pseudo code, or you can say it is a mixture of any programming language construct and less formal English statements. ठीक है. तो सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को कन्वर्ट करने के, प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसका मैथमेटिकल मॉडल तैयार करना होगा. मींस क्या, इनफॉर्मल एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट जिसे हम कहते हैं, उसमें जो है प्रेजेंट करना होगा. ठीक है. वो हम आगे इंशाल्लाह सेक्शन 1.3 में डिटेल में स्टडी करेंगे, व्हाट इज बेसिकली फ्लो चार्ट. ठीक है. उसके बाद हमने उसको उस मैथमेटिकल मॉडल को फॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फॉर्मल लैंग्वेज मीन्स सूडो लैंग्वेज, सूडो कोड. सूडो कोड मीन्स मैंने बता दिया कि उसमें जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें थोड़ा बहुत उसका कम्बिनेशन होगा और कुछ इंग्लिश स्टेटमेंट का जो है कम्बिनेशन होगा, सूडो कोड बेसिकली. जबकि मैथमेटिकल मॉडल जो है जिसे हम फ्लो चार्ट कह रहे हैं, इनफॉर्मल एल्गोरिथम कह रहे हैं,
उसमें जो है ज़्यादातर इंग्लिश स्टेटमेंट्स ही होंगी विद डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग एक जो है अपना एल्गोरिथम तैयार कर लेंगे, फॉर्मल एल्गोरिथम इन द फॉर्म ऑफ सूडो लैंग्वेज और सूडो कोड, सो उसके बाद हम लोग जो है एबल होंगे कि हम उस फॉर्मल लैंग्वेज को डेटा स्ट्रक्चर में अपने कन्वर्ट कर लें। मींस के सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जो सी भी लैंग्वेज हमारी ये है रिक्वायर्ड, उसमें जो है कन्वर्ट कर लें अपनी उस प्रॉब्लम को, और फिर जो है हमारा जो है प्रॉब्लम जो है प्रोग्राम हो जाए, ठीक है। सो आगे चलते हैं। तो इन द फर्स्ट स्टेज मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। In the first stage, modeling, we try to represent the problem using an appropriate mathematical model such as a graph, tree, etc. At this stage, the solution to the problem is an algorithm expressed very informally. Okay. And in the second stage, the algorithm is written in pseudo language or formal algorithm, that is a mixture of any programming language, constructs and less formal English statement. The operation of to be performed on the various types of data become fixed. In the last and final stage, we choose an implementation for each abstract data type and write the procedure for the various operation on that type. The remaining informal statements in the pseudo language algorithm are replaced by or any other programming language, or you can say C or C++. So I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। Definition. Now it's a proper definition of algorithm. An algorithm is a set of instruction, steps, rules that are followed to solve a problem. Means के algorithm basically set of instruction है किसी भी problem को solve करने के लिए. It is a tool for solving a well specified computational problem. In our daily life as well, we follow various algorithms without knowing. For example, we follow our daily routine after waking up in the morning. We follow a set of instruction while driving a car. We follow recipes in cooking food or making tea. These step-by-step instructions that we follow every day are algorithms to solve certain problems. There are two common methods to express algorithm design, that is pseudocode and flowchart, that I have discussed in previous 2-3 slides. आगे चलते हैं। Role of algorithm. Algorithm का क्या role है in problem solving? So algorithm give us the most ideal option of accomplishing a task in problem solving. मतलब कि ये एक आइडियल ऑप्शन है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। दे आर यूज टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इन डूइंग सो दे इम्प्रूव द एफिशिएंट ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब कि अगर हम एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सो चांसेस होंगे कि वो जो भी प्रॉब्लम है उसकी जो भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसको प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो एफिशिएंट हो, ठीक है। So this best algorithm, a computer program will be able to produce very accurate result. An algorithm can be used to improve the speed at which a program executes. मतलब कि algorithm डिजाइन करने से ये भी हो रहा है कि हम ये देख सकते हैं कि हमारी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जो है स्पीड कैसे लग रही है, ठीक है। मीन्स के एल्गोरिथम जो है उस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की जो है उसके थ्रू जो है हम उसकी स्पीड में भी इम्प्रूव ला सकते हैं। In computer programming terms, an algorithm is a set of well-defined instructions to solve a particular problem. It takes a set of inputs and produces the desired output. For example, here an algorithm to add two numbers are given. Means first step is to take two numbers as input, then add these two numbers using the plus operator, then display the result. Simple. Adding two numbers, इसका जो algorithm हमने ready किया सिर्फ थ्री steps में। Means कि हमने दो number input लिए, for example a b, मैंने दो नंबर इनपुट लिए, फिर उनको उनकी कोई ना कोई मैंने वैल्यू डिक्लेयर करवाई, जैसे कि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4। फिर उनको मैंने ऐड किया यूजिंग दी ऑपरेटर प्लस। सो a प्लस b इज 3 प्लस 4, डिस्प्ले द रिजल्ट 7। सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड एल्गोरिथम। क्वालिटीज क्या है गुड एल्गोरिथम की? So input and output should be defined precisely. Each step in the algorithm should be clear and unambiguous, मतलब कि clear and precise.
Algorithm should be most effective among many different ways to solve a problem. An algorithm should not include computer code. यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि it should not include computer code, but जो pseudo जो code है, it is a mixture of any programming language and English statement. Instead, the algorithm should be written in such a way that it can be used in different programming languages. So qualities तो ये है. So I hope so यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, and you may find qualities of a good algorithm on page 6 of your textbook. So here are some advantages and disadvantages of algorithm. क्योंकि कोई भी चीज advantages और disadvantages के बगैर नहीं मिल सकती. So advantages ये हैं कि it is easy to understand. अभी तक यही हमने देखा है कि एल्गोरिथम को जो है ऐसे हम लोग डिजाइन करें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखें किसी भी प्रॉब्लम की कि तो उनके जो है इजीली हम समझ सकें. सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम. In algorithm, the problem is broken down into smaller pieces or steps. Hence, it is easier for the programmer to convert it into an actual program. So disadvantage ये कि writing an algorithm takes a long time, so it is time consuming. सम टाइम ऐसा होता है कि प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि जो है एल्गोरिथम उसका लिखना जो है बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है. सो यूं कह सकते हैं कि इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग. अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक थ्रू एल्गोरिथम कैन बी वेरी डिफिकल्ट. कुछ चीजें होंगी कि जो है वहां पे कॉम्प्लेक्स लॉजिक आ रही होगी. सो जो है समटाइम्स ऐसी ऐसे जो है लॉजिक को थ्रू एल्गोरिथम अंडरस्टैंड करना जो है डिफिकल्ट हो जाएगा. ब्रांचिंग एंड लूपिंग, जैसे कि यहाँ पे हम कहा है कि इट इज इजियर फॉर द प्रोग्रामिंग टू कन्वर्ट एनी प्रॉब्लम इनटू एन एक्चुअल प्रोग्राम जस्ट बाय broken down the problem into smaller pieces. But sometimes ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा लूप्स लग रहे होते हैं प्रोग्रामिंग में, या बहुत ज्यादा ब्रांचिंग हो रही होती हैं, तो उनको हम लोग जब एल्गोरिथम के थ्रू जो है शो करेंगे तो समटाइम दे आर डिफिकल्ट टू शो इन अ एल्गोरिथम. तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा एल्गोरिथम के थ्रू जो है शो करना. सो दिस इज यहाँ पे लिखा हुआ है IMP. सो इट मींस दैट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम के जिस प्रोग्राम में जिस प्रॉब्लम में जो लूपिंग स्टेटमेंट ज्यादा लग रहे होंगे तो वो एल्गोरिथम के थ्रू जो है शो करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है. सो आगे चलते हैं. So section 1.2.3 subsection of section 1.2 algorithm examples. The first example is to making a cup of tea. So how can we make a cup of tea? So algorithm is given. A first step is to start. Second step, place the fresh water in a pot or a kettle. Step 3, boil the water. Step 4, put the black tea leaves in that pot. Step 5, after that add some milk into that pot. Step 6, add some sugar, then boil for some time. Step 8, stop. Algorithm 2, we have to add two numbers. First step is to start. Second step, declare variables num1, num2 and sum. num1, num2 and sum का मतलब क्या है? For example, C is equal to A plus B. So I have to declare कि ये जो variables हैं ये किस टाइप की, या एज एन टीचर्स आएंगे या जो है डेसिमल फॉर्म. सो डिक्लेयर का मतलब ये, क्योंकि कंप्यूटर को तो नहीं पता कि जो है कौन सा वेरिएबल हम ले रहे हैं. Step 3, read values num1 and num2. Here we have to give input. ये जो है num1 की वैल्यू क्या होगी, num2 की वैल्यू क्या होगी, ताकि जो है एडिशन हो सके. Then step 4, add num1 and num2 and assign the result to the sum. Sum is equal to num1 plus num2. Step 5, display the sum. Step 6. Step 3, average of three numbers. आई होप से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि डिक्लेयर एंड रीड क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. So first step is to start. Average of three numbers means we have, for example, three number A plus B plus C. Means A, B, C are three numbers. Adding all these divided by how many numbers are there? 3. So this is the average of these numbers. So declare variables num1, num2, num3 and average. हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, A, B, C and A. Step 3, read values num1, num2, num3. Means यहाँ पर हमने values दी. Step 4, apply formula. Average is equal to sum divided by number of values. Average is equal to num1 plus num2 plus num3 divided by 3. Simple. Step 5,
display average. Step 6 is to stop. Simple. Volume of a box. एक box है, for example, मैंने box बना दिया. अब मुझे जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल ये है, ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. ठीक है. फॉर एग्जांपल, so first step is start declare variables length, width and height and volume. Step 3 read values length, width and height. मतलब कि यहाँ पे हमने length, height और width की values देनी है. Then step 4 apply formula. Formula apply करना. Volume is equal to length into width into height. Volume is equal to length into width into height. इसमें हमने हमारी जब values आ जाएंगी वो दे देगा तो volume जो है calculate हो जाएगा. Then step 5 display volume. Step 6 stop. Then we have percent calculate. How can we calculate percentage of anything? So step 1 is start. Step 2 declare variables, part, total and percentage. So for example, a जो है हमारा जो है given number क्या कहते हैं जो नंबर हमने लिए हैं वो है. t से हम कह देते हैं टोटल, मतलब कि कितने में से, और परसेंटेज. ठीक है. इनको हमने डिक्लेयर करवाया a, t and percentage. For example, read values part and total. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू है मेरे पास 50 एंड टोटल है फॉर एग्जाम्पल 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. तो वो परसेंटेज किस में आएगी? फॉर एग्जाम्पल इस परसेंटेज. सो रीड वैल्यूज पार्ट एंड टोटल हमने यहाँ पे वैल्यूज दे दी, वैल्यूज इनपुट दी. स्टेप 4 अप्लाई फॉर्मूला. फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ स्टेप 5 इज डिस्प्ले परसेंटेज. अब हमने परसेंटेज डिस्प्ले कर देनी है कैलकुलेट के बाद. स्टेप 6 इज स्टॉप. सो दिस इज दी these all are basic algorithm for finding the percentage, calculating percentage, calculating volume, sum of two numbers, average of three numbers, and algorithm to making a T. Okay. So I hope so. What is algorithm? Its advantages and disadvantages, qualities of a qualities of a good algorithm. So I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. किसी को भी किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम हो, so you may ask me or comment your query anytime. I will try to respond them as soon as possible. So thank you for watching and don't forget to subscribe my channel Talim for Everyone if you like my video. So hit like button and also don't forget to press bell icon ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर और टाइम पे मिलती रहे. So thank you once again. Allah Hafiz.